together and welcome our chief guest for the day, Union Minister of Home Affairs, Shri Rajnath Singh Ji. Sir, we are very fortunate to have you amongst us this morning. I welcome you on behalf of the NDRF, Director General Shri O.P. Singh. I also welcome Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We are just awaiting for Dr. P.K. Mishra. He will be here any moment. I extend a very hearty welcome to you, sir, on behalf of the NDRF, the DG, Shri O.P. Singh. May I now request Shri O.P. Singh, DG NDRF, to kindly deliver his welcome address. आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी, एनडीएमए के ऑनरेबल मेंबर्स एवं सचिव श्री आर.के. जैन, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, समारोह की गरिमा बढ़ा रहे अन्य सुरक्षा बलों के पूर्व महानिदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं अन्य इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारीगण, श्री वासु मित्र, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मीडिया के मित्रों एवं साथियों, आज का दिन हमारे लिए अपार गौरव का दिन है जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे कर रहा है। आज ही के दिन, आज से 9 वर्ष पूर्व बल की स्थापना राष्ट्र के निर्माण में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के रूप में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से न केवल प्रभावी ढंग से निपटने, बल्कि ऐसी त्रासदियों में पीड़ित मानवता को तत्काल बचाव और राहत की अस्थायी व्यवस्था के रूप में की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर तो हुआ, किंतु राह में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां देश ने कई अवसरों पर बाहरी दुश्मनों के दांत खट्टे किए, वहीं राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां पैदा करने वाली शक्तियों को भी प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया गया और राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को सतत एवं अखंड रखा गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद निर्माण की असंख्य चुनौतियों के बीच विकास के पथ पर अग्रसित देश को अपनी नियति से भी दो हाथ करने पड़े और अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। जब अलग अलग मौकों पर भूकंप में लाखों लोगों का संहार करने वाली त्रासदी से लेकर तूफानों की हाहाकार मचाती प्रचंडता से देश को साक्षी होना पड़ा। सिर्फ प्राकृतिक विपदाएं ही नहीं, बल्कि भोपाल गैस दुर्घटना जैसी मानवीय त्रासदी ने भी राष्ट्र जीवन को गहरे प्रभावित किया और आखिरकार इन प्राकृतिक चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने की अस्थायी व्यवस्था के रूप में इस बल का गठन 2006 में किया गया। अपने गठन के बाद पिछले 9 वर्षों में बल ने स्वयं को आपदाओं से रक्षक के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि देश के ही नहीं अपितु दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली आपदा के समय मानवीय आशाओं और जीवन की लौ को सहेजा है। वर्तमान में एनडीआरएफ की 10 बटालियन देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 13,000 अधिकारियों, जवानों और उनके संकल्पों के साथ किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा से निपटने हेतु तैनात है। हमारे अधिकारियों और जवानों ने कई अवसरों पर अपनी कुशलता, योग्यता और दक्षता का परिचय देकर कठिनाइयों में फंसे देशवासियों को त्वरित और प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई है। पिछले वर्ष गृह मंत्रालय के निर्देशन में की गई हमारी तैयारियों का ही परिणाम रहा कि हमने आंध्र प्रदेश और पूर्वी तटवर्ती इलाकों में हुदहुद नाम से आए चक्रवाती तूफान में जान माल के नुकसान को न्यूनतम स्तर पर रखा। हमारी तैयारियों और जवानों के हौसले ने जीवन की संभावनाओं को बचाया, उसे बढ़ाया। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को विनम्रता पूर्वक अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में अपनी स्थापना के उपरांत इस बल ने 2008 में कोसी की बाढ़, 2010 में लेह लद्दाख में क्लाउड बर्स्ट, 2012 में साइक्लोन नीलम के अलावा क्लोरीन गैस के रिसाव से लेकर खतरनाक रासायनिक विस्फोट जैसी संहारक स्थितियों में भी तेजी और कुशलता से निपटा है।
इन अलग अलग आपदाओं में हमने अपनी क्षमता और योग्यता भर जीवन नहीं बचाया, बल्कि हमने अपने समर्पण भर जीवन बचाया है और सिर्फ राष्ट्रीय जीवन में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने सरोकारों का प्रसार किया। वर्ष 2009 में जापान में आई सदी की सबसे भयंकर सुनामी में राहत दल भेजा गया, जिसमें जापान के सुदूर और दुर्गम इलाकों में राहत अभियान चलाकर अमूल्य जीवन की रक्षा की गई। इसी प्रकार वर्ष 2013 में केदारनाथ घाटी की भीषण तबाही के समय बल की 14 टीमों ने रात दिन बचाव अभियान कराकर लगभग 10,000 लोगों की जानें बचाई और 300 से अधिक शवों को अंतिम सम्मान हेतु उनके संबंधियों को सौंपा। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में आई अभूतपूर्व बाढ़ के दौरान भी बल ने विपरीत परिस्थितियों में झेलम के प्रकोप से सहमी कश्मीर की वादी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महोदय, संपूर्ण भारतवर्ष में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 23 स्थान निर्धारित किए गए हैं जहां किसी भी प्राकृतिक या अन्य आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा घेरे के रूप में बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन अधिग्रहित की गई है जहां निर्माण कार्य होना बाकी है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाव और राहत कार्यों में स्तरीय और कौशलपूर्ण प्रवीणता को प्रमाणित करने वाली संस्था इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप से भी प्रमाणन हेतु कदम उठाए गए हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उड़ीसा और दिल्ली में हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अभी हाल ही में एनडीआरएफ ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत एम्स के ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर्स व पैरामेडिक्स को एनडीआरएफ की टीम के साथ भारत के विभिन्न प्रभावित हिस्सों में आपदा संबंधी राहत कार्य करना है। इस समझौते से हमारी मेडिकल कंपोनेंट को मजबूती मिली है। गाजियाबाद में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू प्रशिक्षण क्षेत्र, जो 6 एकड़ की भूमि में लगभग 4 करोड़ की लागत से बनेगा, उसका कार्य शुरू किया जा चुका है और मई 2015 तक इस प्रोजेक्ट को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने हमेशा एनडीआरएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाया है। कई स्थानों पर, कई मीटिंग्स में हमारे गृह मंत्री जी ने इस बल की भूरी प्रशंसा की है। कुछ ही दिनों पूर्व माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ के कार्मिकों के लिए एनडीआरएफ रिस्पांस मेडल की घोषणा की थी। उनके इस निर्णय से जवानों एवं अधिकारियों का मनोबल ऊंचा हुआ है और बल में नई शक्ति का संचार हुआ है। इस अवसर पर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान एनडीआरएफ की कुछ समस्याओं के प्रति भी आकर्षित करना चाहूंगा। एनडीआरएफ के पास अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एकेडमी, जो नागपुर में बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसके प्रबंधन एवं संचालन करने की पूरी जिम्मेवारी एनडीआरएफ को दी जाए। इसे एनडीआरएफ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए। महोदय, एसएसबी की 2 बटालियन को एनडीआरएफ में सम्मिलित करने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है। हमने एसएसबी की 6 कंपनियों को प्रशिक्षित भी कर दिया है। अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उन दोनों बटालियन को जल्द से जल्द एनडीआरएफ में शामिल करने का आदेश देने की कृपा करें। हमारे जवानों को अत्यंत विरम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, लेकिन इन मुश्किलों को जहां हम अपनी चुनौती मानते हैं, वहीं हम इन संकल्पों की परीक्षा और समर्पण के प्रतिमान के रूप में भी स्वीकार करते हैं। हम लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपने आप को मुस्तैद रखते हेतु प्रतिबद्ध हैं। फिर भी आपसे अनुरोध है कि एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए हर सदस्य को लगभग 30% रिस्क अलाउंस भारत सरकार से दिलाने की अनुकंपा करें। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का, विशेषकर माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। By the Police Medal for Meritorious Service for the year 2014. His commendable work, he has been awarded with the Police Medal for Meritorious Service, and now, in recognition to his consistent, outstanding performance, he is being awarded with the President's Police Medal for Distinguished Service on the occasion of Deputy Inspector General. Dr. Santosh Kumar Mishra, Chief Medical Officer SG 1st Battalion, for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. Ladies and gentlemen, kindly put your hands together for the exemplary service.
Shri Veera Kumar Das, Assistant Commandant Executive, 3rd Battalion, for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. Shri Veera Kumar Das, Assistant Commandant Executive. Shri Vijay Kumar Ojha, Inspector Ministerial, now Assistant Commandant Ministerial, 3rd Battalion, for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. Shri Vijay Kumar Ojha. Shri Yashpal, Assistant Commandant GD, 7th Battalion, for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. Shri Yashpal. ASI GD Ram Sevak Singh, 9th Battalion, for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. ASI GD Ram Sevak Singh. And finally, Shri Inderaj Singh, Head Constable GD, 2nd Battalion. Please put your hands together for him for receiving the Police Medal for Meritorious Service on the occasion of Republic Day 2014. Shri Inderaj Singh, Head Constable GD, 2nd Battalion. I thank you, Shri Rajnath Singh Ji, Union Home Minister, for conferring all these medals and encouraging the recipients one more time for their courageous and selfless service. This encouragement goes a long way in inspiring the entire force. And now it's time to release the souvenir. May I request Union Home Minister Shri Rajnath Singh Ji to kindly release the NDRF souvenir on different paradigms of disaster response and management. A big round of applause, ladies and gentlemen. Shri Rajnath Singh Ji to kindly release the J&K document. During J&K floods in September 2014, there were 22 teams of NDRF comprising of approximately 1,000 men. NDRF did an outstanding job of rescuing over 50,000 people, distributed over 85 tons of relief material, attended to over 10,000 patients and 15 toilets. And now I invite our Chief Guest, Shri Rajnath Singh Ji, Union Home Minister, and the Chief Postmaster General, Shri Vasu Mitra, to do the honor of releasing the special cover. Ladies and gentlemen, NDRF has come up with a special promo film on gallant rescue operations of the force, and now it's time to release this very promotional film. So I request the Honorable Union Home Minister Shri Rajnath Singh Ji to do the honors. बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में, तूफानों में, हादसों में, हर हाल में मददगार हैं हम।
मुश्किल घड़ी में हौसले की पहचान है हम। चुनौती कितनी भी कठिन हो, हर हाल में तैयार हैं हम। जानते हैं हर सांस की कीमत, टूटती आस की उम्मीद हैं हम। तूफान से भी तूफानी इरादे, चट्टानों से भी हमारी है जज्बा। हिम्मत से भी ज्यादा हिम्मती, मुसीबतों से ना हार हैं हम। लगाते अपनी जान की बाजी, फर्ज की खातिर और मिटते हैं हम। अब नहीं रुकना, अब नहीं थकना, हमने ठाना है, बढ़ते जाना है। हम हैं NDRF, आपदा सेवा सदैव। Well, that was just a glimpse of the exemplary work that the NDRF puts in the country. और मैं ये कहना चाहूंगी कि NDRF के ये बचावकर्ता ही देश की शान है। खतरों से खेलने वाले जाबाज ही तो देश की पहचान है। जहां रहते हैं इन जैसे जाम में खेलकर दूसरों को बचाने वाले, उस देश का नाम ही तो मेरे दोस्तों हिंदुस्तान है। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच आज मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो अपनी निष्ठा, समर्पण और कार्य के लिए बखूबी जाने जाते हैं। आप भारत में गृह मंत्री की पदवी संभाले हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं तथा वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप कृपया 2 शब्द कहें। डायरेक्टर जनरल NDRF श्री OP सिंह और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी PMO डॉक्टर PK मिश्र जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री बासु मित्र जी और सेक्रेटरी NDMA श्री RK जैन, इस सभागार में उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए और सारे डायरेक्टर जनरल्स एवं अन्य NDMA से जुड़े हुए सभी मेरे मित्रों, आपने देखा कि जिस समय मुझे आमंत्रित किया जा रहा था तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया है मेरे लिए। मैं वही डॉक्टर PK मिश्र जी से पूछ रहा था कि अब भी हमारा परिचय कराने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन होता है किसी को चीफ गेस्ट के रूप में, स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है तो उसकी प्रशंसा में कुछ न कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं, ये मजबूरी होती है। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित होता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से वो विभूषित होता है। और पद के कारण ही किसी व्यक्ति का कद नहीं बड़ा हो सकता है, बल्कि यदि कद बड़ा होता है तो अपनी कृतियों के कारण कद बड़ा होता है। और जानबूझकर मैंने अभी इन वाक्यों का प्रयोग आप सबके समक्ष किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस NDRF के कार्यक्रम में मैं यहां पर मौजूद हूं, आज डिजास्टर रेस्पॉन्स की लीड एजेंसी के रूप में अपने को स्थापित करने में NDRF ने कामयाबी हासिल की है। और इस 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सारे ऐसे जाबाज NDRF के सारे जवानों को और सारे अधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
डिजास्टर सिचुएशन पैदा होने के बाद सबसे पहले एक्शन में आने वाली यदि कोई फोर्स होती है तो वह एनडीआरएफ की होती है। मैं जानता हूं हमारे जैसा व्यक्ति जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, परोक्ष सत्ता के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, वह मानता है। हमारी इस मान्यता पर एक विवाद हो सकता है, लेकिन हमारी एक दृढ़ मान्यता है, आस्था है कि जीवन मरण जो होना है वो होगा। समय को लेकर भी कोई कह सकता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति भले ही कोई ऑर्थोडॉक्स हमको क्यों न मान ले, लेकिन मैं मानता हूं कि सारी चीजें प्री डेस्टिन्ड है और वजहदारी। लेकिन यदि यह परमात्मा किसी को संकट के भंवर में लाकर खड़ा करता है, प्राकृतिक आपदा की जब स्थिति पैदा होती है, तो आप ये जानते हैं जो लोग प्राकृतिक संकटों में फंस जाते हैं उनकी क्या स्थिति होती है बतलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह कही चाहत होती है कि कोई न कोई आकर मुझे बचा ले। लेकिन उस समय भी यदि उनका सहारा यदि कोई बनता है तो हमारी एनडीआरएफ के जवान ही उनका सहारा बनते हैं। और मैं तो अपने एनडीआरएफ के जवानों को यह कहता भी हूं, सब कुछ परमात्मा के हाथ है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन परमात्मा की विधाता की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि संकट में फंसे हुए किसी व्यक्ति अथवा जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे किसी व्यक्ति को बचाने का माध्यम यदि बनाया है तो आप एनडीआरएफ के जवानों को बनाया। यह आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। और मैं जानता हूं कि प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वह 80% लंबे समय से कुछ न कुछ ऐसे कारण बनते चले जाते हैं जिन कारणों से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ऐसे 70% कोई कह सकता है, 75%, 80% प्राकृतिक आपदाएं ऐसी ही होती हैं। इस हकीकत को भारत ही नहीं, दुनिया का कोई समझदार व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। कोई ग्लोबल वार्मिंग कहता है और बहुत सारे कारण लोग बताते हैं, लेकिन प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। मुझे लगता है कि आज के कुछ वर्ष पहले विकास की अंधी दौड़ में हम ऐसा लगे थे कि प्रकृति का जितना भी हमको शोषण करते बना, हमने शोषण करने की कोशिश की है। डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह कंपैटिबल टू नेचर होना चाहिए। प्रकृति से जो लेने की हमारी आवश्यकता है हम लें डेवलपमेंट की, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रकृति से हमको उतना ही लेना है जिसको प्रकृति उस क्षति को स्वयं ही पूरा कर सके। इस बात का ध्यान हमको रखना पड़ेगा। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो इन प्राकृतिक आपदाओं के संकट से हमको जूझना ही पड़ेगा। मैंने देखा है अपने एनडीआरएफ के जवानों को कैसी अहम भूमिका इन लोगों ने निभाई है। क्योंकि मैं पुणे में जो प्राकृतिक आपदा आई थी, मालिन स्थान में मैं स्वयं गया था, मैंने देखा। वहां काश्मीर में मैं गया था, वहां देखा काश्मीर में 50,000 से अधिक लोगों को जिस तरीके से हमारी एनडीआरएफ के जवानों ने निकाला है। मैं अपने सेना के और वायुसेना के भी, नेवल फोर्सेस के भी सारे जवानों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है काश्मीर। सबको मैं बधाई देता हूं। इनके काम को मैंने देखा है, वही नहीं, चाहे हुदूद रहा, प्रारंभ में यदि पहले ही 1-2 दिन पहले सूचना मिल गई, तब से ही लोगों को वहां से निकालना प्रारंभ कर दिया ताकि इस संकट के भंवर में वो फंसने न पाए। उत्तर प्रदेश भी रहा है, बिहार भी रहा है, मैंने सभी जगह इनको अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए मैंने देखा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पूरे एनडीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन की
एनडीआरएफ उसी का पार्ट है। इनकी इफिशियंसी को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत महसूस मैं करता हूं। यह कैसे हो सकता है, मैं इस संबंध में बहुत कुछ सुझाव देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस समय एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ डॉक्टर पीके मिश्र इस मामले में पूरी तरह से पारंगत है, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। यह मुझे जानकारी है क्योंकि गुजरात में भी इस तरीके से इन्होंने पूरा प्लान चार्ट आउट करना, किस प्रकार का मैकेनिज्म खड़ा हमको करना चाहिए, इन सब सारी चीजों के बारे में इनकी मौलिक सोच रही है, उसकी मैं सराहना करता हूं। मुझसे बेहतर वो बतला सकते हैं, इस हकीकत को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं हाई टेक का प्रयोग होना चाहिए। अब हाई टेक के प्रयोग में सैटेलाइट फोन हो सकते हैं, ईमेल की भी हो सकता है, हम ये सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि क्यों यह बातें मैं कह रहा हूं हाईटेक का प्रयोग करने, क्योंकि जो संकट में फंसा है, बाढ़ में फंसा है, भूस्खलन के कारण फंसा हुआ है, तो कम से कम हमारे एनडीआरएफ के जवानों का सीधा कम्युनिकेशन तो उनके साथ हो सके। और कम्युनिकेशन भी ऐसी स्थिति में यदि हो जाता है तो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को कितना बड़ा संबल मिलता है, उस व्यक्ति को कितना बड़ा सहारा मिलता है। इसको कैसे किया जा सकता है। और आज यदि आपका सेमिनार है तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर भी आप लोगों ने कुछ सोचा होगा और इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे कि हमको क्या क्या चीजें हाईटेक को ध्यान में रखते हुए डेवलप करनी चाहिए। मैं लाइव डेमो देख रहा था प्रगति मैदान में, शायद 1.5 महीने पहले आप भी थे, लाइव डेमो में देख रहा था। सब देखा मैंने वहां की किस तरीके से हमारे एनडीआरएफ के जवान वहां पर अपनी बहादुरी का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर मैंने हेलीकॉप्टर भी देखा। हेलीकॉप्टर का भी एक पुतला बना हुआ था और उसमें रिकॉर्डिंग रही होगी हेलीकॉप्टर की आवाजों की। फिर वह दिखा रहे थे कि वह हेलीकॉप्टर कैसे जाकर इस आपदा में फंसे हुए लोगों को बचाने की वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। वो भी मैंने देखा। मुझे लगा कि आवश्यकता है आज की, और प्रकृति जैसा अपना संतुलन खो रही है। एक डेडिकेटेड एयर कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था इस एनडीएमए के साथ होनी चाहिए। अब उसके बारे में विचार करें, कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, क्या होना चाहिए, यह आप लोगों के विचार का विषय है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, एक चीज और जो महसूस होती है कि 6-7 महीनों के अंदर जो मेरा अनुभव आया है उसके आधार पर मैं सारी चीजें बोल रहा हूं। फायर सर्विसेज, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एनडीएमए कहती, क्या इनके बीच सिनर्जी स्थापित करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सिनर्जी होनी चाहिए। हमारी अब तक की जो बहुत कम जानकारी है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सिनर्जी होनी चाहिए। और जिस अभी श्री ओपी सिंह ने अपने वेलकम स्पीच में कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कि किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, उसकी जो चर्चा की है कि ट्रेनिंग एकेडमी ये होनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। वही मैं अभी पीके मिश्र जी से मैं चर्चा कर रहा था कि नागपुर में सिविल डिफेंस की भी ट्रेनिंग एकेडमी है और शायद फायर सर्विसेज की भी वहीं पर, दोनों की। क्या ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पर किसी में, सिविल डिफेंस में, फायर सर्विसेज में, तो क्या हो सकता है आप जानते हैं, करने की वही स्थिति है कि नहीं? क्या फिलहाल अब वहां पर एनडीआरएफ के जवानों की ट्रेनिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? तो यह जो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आई थी वो मैंने आपके सामने विचार के लिए रखा है।
लेकिन इसके आगे आपका सेमिनार चलने वाला है, उसमें आप भी सुझाव देंगे और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ भी उस समय बोलेंगे, उनके भी अपने कुछ सुझाव होंगे। मैंने अपनी तरफ से गृह मंत्री होने के नाते मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस एनडीआरएफ जिसकी मैंने सराहना की है, कभी कभी सराहना तो हौसला अफजाई के लिए की जाती है, लेकिन मैं हृदय से मैं कहना चाहता हूं कि एनडीआरएफ के जवानों की यदि मैं प्रशंसा करता हूं तो उनका काम देखने के बाद और दिल से मैं प्रशंसा करता हूं, केवल उनकी हौसला अफजाई के लिए नहीं करता हूं। तो मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे स्तर से जो कुछ भी होगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अथवा इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, यही आश्वस्त करते हुए और आज पुनः एनडीआरएफ के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं। IPS Director General NDRF to give away the memento to the Union Home Minister Shri Rajnath Singh Ji as a token of our remembrance. A big hand, ladies and gentlemen. And now I request the medal recipients to kindly come up and have a group photograph with the Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh Ji. And I thank you from the bottom of my heart on behalf of the DG Shri O.P. Mishra for coming here, O.P. Singh for coming here and gracing this occasion. And ladies and gentlemen, I request you all to kindly join us for a cup of tea. Thereafter, we shall reassemble here for a lecture by Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi at 12:15. देख सकते Gentlemen, I welcome Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to the Prime Minister Shri Narendra Modi. Thank you so much, sir, for being with us. And now may I invite Shri O.P. Singh, Director General NDRF, to kindly deliver his welcome address. Honorable Dr. P.K. Mishra. Now we begin the thematic session of this conference. Disasters change the landscape in numerous ways, and only a portion of the changes are immediately evident. During the last 3 decades, the frequency and severity of disasters and adverse natural circles have been compounded by the emergence of new quasi-natural and unpredictable events. Natural disasters have numerous impacts on economic policy, on the sustainability of long-term development strategies, and on productive performances. These impacts are particularly relevant in developing countries which experience natural disasters of various origin and intensity, with a sequel of human lives lost and grave economic and social impact. No country is exempt from the complexities of nature's forces and its far-reaching implications. The developed world has long been engaged in a continuous evaluation, installing systems that help in minimizing the consequences of natural disasters, which can at least allow them to be in a state of readiness, enabling them to effectively handle the aftermath of a disaster and to do the best in terms of damage control. We in the developing world are far more vulnerable, which puts much more pressure on us to value human life. Therefore, it is imperative for us to devise a suitable mechanism which allows us to build, protect, and safeguard all of this for ourselves and for successive generations.
Ladies and gentlemen, the expectations of the countrymen and the government from NDRF are very high. Though India has been successfully managing disaster in the past years, there are still a number of shortcomings which need to be addressed. Today, the response has to be far more comprehensive, far more effective, far more swift and well planned based on a well conceived mechanism of response. Notwithstanding the proactive stance of NDRF in dealing with the disasters in India, there is a requirement of addressing critical gaps to match the best international practices. To tell us all and much more, we have with us Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to Prime Minister, who has accepted our invitation to deliver the first lecture on disaster preparedness and response, Some Insights. Dr. Mishra, as you all know, a former member of Indian Administrative Service, has varied work experience and has held senior positions in field organizations as well as at the policy-making levels of the government. He functioned as Chief Executive Officer of Gujarat State Disaster Management Authority during 2001 and 2004, created after the Kutch earthquake of 26 January 2001. He played a crucial role shaping the Gujarat State Management Authority into a vibrant, dynamic and innovative organization, which received a number of prestigious international awards, including those of the United Nations and the Commonwealth Association for Public Administration and Management for outstanding work in disaster recovery and management. May I now request Dr. Mishra to deliver his first lecture on disaster preparedness and response, Some Insights. Dr. Mishra. Sri O.P. Singh, Director General NDRF, Sri Jain, Secretary NDMA, members of NDMA, Dr. Sarma, Mr. Marwa, I can see former members of NDMA also, Sri Sinha, Sri KMC, Mr. Srivastava, of course, from the Northeastern Council, and a lot of work he has done, and very senior officers of various forces, Professor Santosh Kumar, Director, SARC Institute of Disaster Management, and distinguished guests and officers and others of the NDRF. I am delighted to be present at this 10th Raising Day function of the National Disaster Response Force. It's a matter of pride for all of us that the NDRF has not only completed almost a decade of its existence, it has distinguished itself as an effective organization for disaster response nationally and internationally. I congratulate all the members of the NDRF and also NDMA, including the members, former members who are present here, who have played a very crucial role in bringing the NDRF to this level and for their outstanding performance. This occasion is of special significance to me, as to many of you, including people like Sri K.M. Singh and J.K. Sinha, because when we look back and revisit those early days of NDRF, 2006 or so, I happen to be holding the position which Mr. Jain is holding today. And those days, the thinking and ideas and vision for NDRF, we had to put in a lot of struggle to get things done. There are a lot of procedural issues there used to be. And today, after 8 or 9 years, one has a sense of satisfaction that NDRF has become one of the most effective and possibly the most visible face of the disaster management system in the country.
it is appropriate to analyze on this occasion some important aspects of managing and responding to disasters. The topic chosen, disaster preparedness and response, is extremely relevant. When we think of response, particularly disaster response, though we can talk about various methods, skills, one thing is extremely important, that is that certain actions are to be taken in a situation of uncertainty, in the sense that suddenly something happens which may or may not have any warning time. In fact, to illustrate the type of dilemma one faces, for example, when a few days ago Sri O.P. Singh came and asked me whether I can join the NDRF on this Raising Day and give a lecture, I said, being present is one thing, but committing to give a lecture or perform certain function is different, in the sense that it is the only program in the forenoon after the inaugural by the Home Minister. But I said I have no control on my time, in the sense that suddenly something will come up, some meetings, and in our system, in the PMO, certain things are decided the previous night. So he said that it doesn't matter, even if there is some uncertainty, he would like to go ahead. Till 3 days ago, there was no program in the morning. Yesterday morning, I came to know that there is some meeting at around 11. I thought that there is a lot of uncertainty. I thought I will ask him that I will not be able to come. And by evening, suddenly the program, this meeting was advanced to 10 o'clock. I was quite happy that it will be over before 11:30, or if not 11:45. The meeting started a bit late and continued till 11:10. I could reach almost on time. So I was just thinking that when one has to talk about response, this one example where there are a lot of uncertainty when the cyclone will occur. Even if we know some notice, we do not really know where landfall will be. In case of earthquake, of course, you do not know. So I thought that going to a program to talk about response, uncertainties are there, but luckily I could reach the site, but whether the response will be effective or not, I cannot guarantee. So that is for you to judge. So this is what the type, just an illustration, because any other types of activity we have, we can plan, we have time. Here the uncertainty in terms of time, uncertainty in terms of the place also, in the sense that now of course the meteorological department, they have improved, they are able to predict cyclone fairly accurately, of course not as accurately as one would like, but I remember about a decade ago when the Gujarat cyclone 99, because even 2 days before, the forecast will be there is likely to be a severe cyclonic storm or cyclone with such and such speed, and the landfall they will give two places. They will say Jakhau, which is in Kutch, and Surat, and the distance is about 500-600 kilometers or more than that. And one doesn't know, because such a long, it will cover almost half of the state, where to take precautionary measures, where to give the warning to the people. So these things, because of the nature itself, so that is the major issue we must be able to cope with. So
that is important when we plan for response. We need to keep this uncertainty because various types of decisions are to be taken in a situation of uncertainty. Of course, in economics also a lot of work has been done on this risk and what is risk, what is uncertainty and so on. I will not go into that. But one thing I would like to say that managing disaster is of course not something new. For decades and for even a century, we have been managing disasters such as drought, cyclone and earthquake. In recent decades, of course, particularly after the 1990s, when the UN declared it as the International Decade for Disaster Risk Reduction, there is a lot of talk about moving away from a relief and response-centric approach to something focusing on prevention, mitigation and preparedness. I will not talk about prevention and mitigation, but what is being emphasized is preparedness. And when we talk about preparedness, because preparedness is important, and if we are well prepared, then we may reduce the impact of uncertainty to a great extent. But for this purpose, when we talk about whether it is preparedness and of course certainly about mitigation, we need to mainstream the disaster risk reduction activities with our normal day-to-day program. For this, of course, what is required is awareness raising. People should be aware, people in the sense that all the stakeholders, starting from government agencies, NGOs, right up to the community level. Then of course there has to be certain enabling environment in the sense of a legal framework, then changing the operational practices, then of course learning from experience, sharing of experience. And I must compliment NDRF that this Raising Day, which sometimes becomes a ritual, they have converted to a program which can help raise awareness and of course sharing of experiences. Another aspect I would like to say that ideas are there, we know what to do, but the challenge is that how to ensure that this is actually done. So that is the most important aspect. As I was mentioning that we have years of experience in managing disaster, the armed forces, police, even 30 years ago, 40 years ago, they used to respond. But every time there is a major disaster, we have problems. For example, even during the Gujarat earthquake, suddenly the earthquake occurred. For some time, people didn't realize how severe it is. Though subsequently, when we see the photograph, we see a lot of people doing search and rescue. But for some time, at least for a few hours, one doesn't know what has happened, where it has happened, though broadly we know which area is affected. And suddenly you need huge number of machines, the earth-moving machines, rescue equipment, I'm talking about those days. And in a remote area, one may not be able to mobilize those, it can take a lot of time. And if it goes beyond 24 hours or 48 hours, it can be too late. At some point, suddenly it was discovered that after, of course, a lot of people were rescued, of course, a lot of dead bodies recovered. Suddenly it was discovered that those areas there was tremendous shortage of wood for cremation. And that area, semi-desert area, you don't have much of this. So how to get that within a short time? That is required not only for emotional regions, but also for health region, that dead bodies should be disposed of.
there was total failure of communication system. When the relief materials came, it was found that it was over flooded all along. Many things were not required. Medicines, huge quantity came, but it was again realized in many places that for an earthquake, the type of medicine which is required, the type of medical help for those who have orthopedic problem, those who have different types of attention, those who need. There was also plenty of relief material, but how to distribute. So all these problems arise, and a part of the response. But one thing which was also realized that time, that search and rescue itself can be extremely difficult. I remember till when the Gujarat cyclone and also the Odisha cyclone took place, many of the countries, they offered their help, but till that time, Government of India, our policy was not to accept international assistance for disaster-related work. But for the first time, during the Gujarat earthquake, it was changed slightly. It was decided that we will not appeal or ask anybody for help, but if some country offers help, we'll accept it. And because of this liberalization, a number of teams, search and rescue team, of course field hospitals, they came with their equipment, with their various types of equipment which can help search people who are still living below the debris and so on, with hospitals, also field hospital from countries like Israel and others. And that was the first time it was realized, though earlier we thought that, and of course it was rightly, that armed forces and the police and other forces, they had the capability, they were doing basically the search and rescue. It was first time a realization came in the country that search and rescue it itself has become a specialized job. It requires specialized equipment, it requires better skill, which was not available even with the best of forces those days. And that time I remember we sent about 40-50 officers from various police, fire, not very senior, but those who actually operate at the field level, for training to Netherlands and Germany for about 2-3 weeks. Means after the earthquake, after things stabilized, but as a part of the future capacity building, certain procedural matters were to be ignored. And after that, one country offered and we accepted equipment, some of those which now very, very common, to have a search and rescue team. And that was the origin of this concept of having specialized search and rescue. A lot of debate took place, though it was realized that search and rescue teams should be there. But many countries, they do not have specialized forces, they have volunteers who are trained from time to time, but mobilized only at the time of a disaster. But here it was decided to have a specialized force. And this is the origin of the idea of or concept of NDRF. And at some point it was decided we must have some specialized force dedicated to the activity of disaster response. So now
one feels that that concept was right, and the way NDRF has functioned during the last few years, it shows that the concept those days was grounded on sound footing. As all of us know, emergency response is the most visible and also the most critical phase of disaster management. Whatever be the causative factors, the aim of all response operations should be to save as many lives as possible and limit the damage and loss to property, infrastructure, and if possible, environment. Besides, of course, dealing with a wide range of adverse effects on affected communities in the aftermath of a disaster. As I have already mentioned, response phase poses several challenges. Actions and activities are to be taken prior to, during, and immediately after the hazard event, aimed at limiting injuries, loss of lives, and damage to property. Response action prior to a hazard event will involve warning system wherever it is feasible. Example, in case of cyclone, where it is not possible in case of earthquake. Evacuation of people, communication with various stakeholders, and preparedness activities for the period during and subsequent to the hazard event.